Welcome to A for Arsenal. My name is Daksh and welcome to another video on this channel. Should Graham Potter be sacked? ये सवाल कितने सारे क्रिएटर्स के दिमाग में, कितने सारे फैंस के दिमाग में है एंड एवरीवन विल हैव एन ओपिनियन कि हाँ चेल्सी को सैक करना चाहिए, चेल्सी को नहीं सैक करना चाहिए। मेरा भी ओपिनियन है इस सब पे। बट अगर आपको सिर्फ ओपिनियन जानना है तो मैं ये वीडियो में सिर्फ ये नहीं होगा कि Chelsea should sack him or should not sack him. In this video, I will try to give you a little context as to what Graham Potter is as a manager, कि चेल्सी का सीजन अभी तक कैसा चल रहा है. I will also try to explain to you the psychology of Chelsea fans and वो कहाँ कैसे इस psychological point पे आए हैं where their expectations are something and Chelsea is not able to live up to that expectation. And finally, I'll give you arguments both for and against why Chelsea should sack or should not sack Graham Potter. Now, सब बोलेंगे कि दक्ष भाई आप तो आर्सेनल फैन हो, ऑफ कोर्स यूड बी बायस्ड एंड यूड बी सेइंग कि नहीं पॉटर शुड बी केप्ट इन. देखो, आई एम एन आर्सेनल फैन, माई लव फॉर आर्सेनल सबको पता है एंड आई लव द फैक्ट दैट चेल्सी का कभी कभी क्या अभी अच्छा सा खासा डाउन टर्न चल रहा है बिकॉज वो तो हमारे लंदन राइवल्स हैं. But I'm also a content creator and I'm also a consumer of football. Through my content, I don't want to just keep giving you information about Arsenal. I also want to give you information about football and maybe help you understand things beyond कि ऐसा black है and ऐसा white है, sack करो नहीं करो. um, I want to give you a little more context to these situations. So thank you for coming and let's get on with the video. Now अगर हम पहले बात करें, लेट मी गिव यू सम कंटेक्स्ट अबाउट चेल्सी सीजन. चेल्सी ने लास्ट गेम साउथहैम्पटन के साथ हारा, ये गेम टॉटनहम के साथ कल ही हारा था 2-0. जब हम साउथहैम्पटन वाली गेम की बात करते हैं, साउथहैम्पटन हैज़ डन द लीग डबल ओवर चेल्सी इन गॉड नोज हाउ मेनी ईयर्स. In fact, one third of Southampton's 18 points have come against Chelsea. And Spurs के अगेंस्ट भी Chelsea were very uninspiring. बहुत dead, dry सी टीम लग रही थी. And it prompts the question कि यार, is Graham Potter unlucky or is he just a bad manager? And इसके लिए मैं XG यूज करता हूँ. I know a lot of people don't like XG, but I think that's a good starting point to begin my argument. Including the Spurs game, चेल्सी ने पिछले 5 गेम्स में 4.56 XG accumulate किया है और इस 4.56 XG में से चेल्सी ने कितने गोल मारे हैं? 0. नाउ काफ़ी सारी टीम्स अपनी XG को अंडर परफॉर्म करती हैं, बट 0 goals from 4.56 XG is actually really bad, you know. चेल्सी ने इन सारी गेम्स में अपार्ट फ्रॉम मे बी स्पर्स बहुत हाई वॉल्यूम ऑफ चांसेस क्रिएट करे थे बट उससे कोई गोल निकला ही नहीं. एंड देन यू स्टार्ट वंडरिंग कि एक्चुअली इज दिस समथिंग हैपनिंग जस्ट एट चेल्सी? इफ यू लुक एट पॉटर्स करियर, especially if you look at his 2 years at Brighton, the last 2 full years at Brighton का XG was 97.1 in those 2 years. मतलब 2 साल में Brighton should have scored around 97 goals. But how many goals did Brighton actually scored? 82, which means underperforming your XG by whole 15 goals. I think that's really low. In fact, for elite teams, it's fairly common to outperform your XG because आपके पास talent इतना ज़्यादा होता है. But to underperform your XG by 15 goals, I think that's really bad. Potter has a history with XG, a very bad history and very bad relationship with XG. Potter के पूरे career में, the issue has been transforming these expected goals into goals on the pitch. But जब आप बात करते हो कि इसमें गोल्स डिलीवर करने की प्रॉब्लम किसकी है, इज इट द मैनेजर और इज इट द प्लेयर? ये बिल्कुल एक अंडा मुर्गी वाली सिचुएशन हो जाती है. सम पीपल विल से इट इज़ द कोचेस जॉब टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द प्लेयर्स, बट उसमें आप कह सकते हो कि यार जब स्टर्लिंग ने 6 यार्ड से हेडर मिस किया जो गोल लाइन से क्लियर हुआ, या फिर जब गैलेगर ने कोई ऐसा शॉट मारा जो बिल्कुल पोस्ट पे लगा, आप ये सब चीज़ें तो नहीं कर सकते ना कोच. तो कोई बोलेगा मैनेजर की गलती नहीं, प्लेयर की गलती नहीं. मैनेजर को इस सिचुएशन में कोच करना चाहिए, बट मैनेजर तो बॉल नहीं मार सकता ना नेट पे. बट मैनेजर तो सिखा सकता है ना कि आप कैसे पोजीशंस पे आर टू मैक्सिमाइज योर चांसेस ऑफ अ गोल. तो ये सब आर्गुमेंट्स एक के ऊपर एक चलती रहेंगी, विच इज़ व्हाई आई कॉल इट अ सर्कुलर आर्गुमेंट, या फिर एक अंडा मुर्गी सिनारियो कि पहले अंडा आया या मुर्गी.
बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस यार, कॉमन सेंस तो बोलता है दैट यू शुड बी स्कोरिंग एटलीस्ट 1 गोल अगेंस्ट बॉटम प्लेस साउथहैम्पटन, जिसने pretty much 20 plus गेम से एक भी क्लीन शीट नहीं रखी. And the only clean sheet they got was against Chelsea a few days ago. I think that's really bad from Potter. I think हम एक important चीज़ देख रहे हैं कि चेल्सी फैंस में जो ट्रांसफ़र की एक्साइटमेंट थी, दैट इज़ डाइंग डाउन. एंड अब एक्सपेक्टेशन है कि वो ट्रांसफ़र की एक्साइटमेंट जो थी, दैट शुड बी ट्रांसलेटेड ऑन द पिच, बट पॉटर इज़ नॉट बीइंग एबल टू डू इट. This leads me to the next avenue, which is the psychology of Chelsea fans and their expectations. And ये actually आया कहाँ से एंड आगे ले जाएगा कहाँ पे. To elaborate my point on the psychology of Chelsea fans, let me take you to a very interesting event in Stockholm in Sweden. स्टॉकहोम में कई साल पहले एक आर्म्ड रॉबरी हुई थी और इस आर्म्ड रॉबरी में 4 लोगों को हॉस्टेज ले लिया गया था. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 4 थे. जैसे ये हॉस्टेज सिचुएशन रिजॉल्व होती रही, जैसे पुलिस इन हॉस्टेजेस को निकाल रही थी, इन लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली पुलिस को. इन्होंने बोला, जिन लोगों ने हमें कैद करके रखा था, आर कैप्टर्स, इनको आप हार्म मत करना, डोंट किल देम, डोंट हर्ट देम, बिकॉज ओवर टाइम वी हैव डेवलप्ड अ वेरी एमिकेबल रिलेशनशिप टू देम. एंड इस इवेंट को, इस साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को एक नाम दिया गया था स्टॉकहोम सिंड्रोम. नाउ स्टॉकहोम सिंड्रोम एंड चेल्सी फैंस का क्या रिलेशन है? इन शॉर्ट, आई वुड से चेल्सी फैंस are sort of in an amicable relationship with their owners despite being captured by them. इसको मैं explain करता हूँ. I have spoken to two very prominent Chelsea creators. आप लोग जानते हैं, both really good friends of mine. I really admire them, Drogba और Ankit Bhai from Almighty Blues FC. When I was discussing with them Potter की situation, Potter को sack करना चाहिए नहीं करना चाहिए, and they asked me कि तेरे को क्या लगता है, and I said, देखो यार, आर्टेटा के साथ भी सेम सिचुएशन थी. Everyone hated him. Everyone wanted him out. लोग कह रहे थे एलरडाइस को लाओ. Nobody trusted him, but बोर्ड ने ट्रस्ट किया, टाइम दिया, अच्छे से बैक किया, एंड ही टर्न्ड इट अराउंड. तो आई थिंक चेल्सी को भी थोड़ा होना चाहिए. एंड दोनों क्रिएटर्स से, वेरी सरप्राइजिंगली, दोनों क्रिएटर्स से मुझे सिमिलर आंसर मिला. थोड़ा सा डिफरेंट था इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, बट द मेन आइडिया वॉज, with all due respect, this is Chelsea Football Club. Now, when they say that, they don't want to patronize me, of course. But what do they mean when they say this is Chelsea Football Club? What is Chelsea Football Club? अगर मैं आप लोगों से कहूँ, आप चेल्सी फुटबॉल क्लब को सोचो, अपार्ट फ्रॉम देयर लोगो, अपार्ट फ्रॉम द ब्लू कलर, अपार्ट फ्रॉम देयर सॉन्ग्स, यू वुड से चेल्सी एक फुटबॉल क्लब है, वो इज़ वेरी सक्सेसफुल. और उनके सक्सेस का मॉडल है, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन प्लेयर्स, एंड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, you fire the manager. Since the Abramovich ownership, Chelsea fans have been accustomed to this model, where things go wrong, you fire the manager, you win a trophy in a couple of years, and you spend loads of money to get the players that the manager wants. And you repeat, and you repeat, and you repeat, and you repeat. Chelsea fans को ये ownership model बहुत normal लगता है, but ये normal नहीं है. सब क्लब्स पैसे स्पेंड करते हैं, सब क्लब्स फायरिंग करते हैं, बट इतनी फ्रीक्वेंटली कोई फायर नहीं करता, ना कोई इतनी इंटेंसली पैसे खर्चता है. चेल्सी फैंस आर स्पेशल. नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि चेल्सी फैंस ही खास और बाकी फैंस खास नहीं है, बट चेल्सी फैंस को एक चीज़ स्पेशल बहुत बनाती है. दे आर वन ऑफ द वेरी फ्यू क्लब्स हु लव देयर ओनर्स. इफ यू लुक एट यूनाइटेड, they hate their owners. If you look at Liverpool, they hate their owners. Arsenal fans hate their owners. Newcastle United hated their owners. Mike Ashley Spell, जो थे उनके owners. Chelsea fans don't have that problem. What is there to hate? आपका क्लब सक्सेसफुल है, अच्छी बात है. एंड जब आपको प्लेयर्स चाहिए होते हैं, तो योर ओनर इज विलिंग टू स्पेंड मनी. एब्राहिमोविच एंड बोली दोनों के टाइम पे तो बात ट्रू हो ही रही है. तो फिर व्हाई वुड यू हेट इट? आई थिंक ये ओनरशिप स्टाइल ने चेल्सी फैंस को इस तरह से कैद कर दिया है, वेयर अगर सक्सेस है एंड पैसा है, तो ओनर की तो गलती हो ही नहीं सकती. इफ यू डिग अ लिटिल डीपर, you will see that this Abramovich style of ownership was very unhealthy. In fact, सेव द ब्रिज करके कैंपेन था जब इब्राहिमोविच से चेल्सी ले लिया गया था. एंड सेव द ब्रिज इसलिए था बिकॉज देयर वाज सो मच डेट ऑन चेल्सी
that no one else was willing to buy it. And it took Abramovich to absolutely forgive his debt so that Chelsea could be transferred and Chelsea could be saved. ये मैं exaggerate नहीं कर रहा हूँ. If you read on it, this is actually true. There are financial documents, proofs, everything online. आप देख सकते हो. Save the Bridge was a very real campaign. वरना Chelsea administration में होता. बट यही प्रॉब्लम है ना, ये ओनरशिप स्टाइल इतना अनहेल्दी था, बट कभी चेल्सी फैंस ने ओनर को क्वेश्चन नहीं करा. क्यों करते? बिकॉज वो कैप्टर्स, इन दिस केस द ओनर, is making Chelsea fans happy by making them fall in love with them or having an amicable relationship with them by spending money and firing managers and guaranteeing trophies. And यही Abramovich hangover टॉड बोली के साथ भी दिखा है in terms of money. एंड आई थिंक चेल्सी फैंस अभी भी उस एब्राहमोविच वाली स्टेट में इसलिए हैं बिकॉज टॉड बोली ने भी एब्राहमोविच जैसे पैसे खर्चे हैं एंड देर एक्सपेक्टिंग वो भी एब्राहमोविच जैसे मैनेजर सैक करेगा. द साइकोलॉजी ऑफ द चेल्सी फैन इज दैट वी नीड टू चेंज थिंग्स क्विक नाउ. ये नहीं कह रहा कि ग्रैहम पॉटर की इसमें गलती नहीं है. बहुत सारे लोग कहेंगे सब्सटीट्यूशंस बेकार हैं, आइडेंटिटी नहीं. हम सब इस चीज़ों पे आएंगे, ग्रैहम पॉटर की गलती पे आएंगे. But have you ever thought that the owner is to blame? कितने चेल्सी फैंस when you hear this sentence, maybe the owner is at fault, आपके दिमाग में एक फ्रिक्शन आता है. How can the owner be at fault? ओनर ने तो सब चीज़ें सही करी हैं, पैसे खर्चे हैं एंड ट्रॉफीज जीते हैं हिस्टोरिकली. एंड ये वाला ओनर भी पैसे खर्च रहा है तो ये भी ट्रॉफी जीतना चाहता होगा. अब ट्रॉफी जीतने का तो एक ही तरीका है दोस्त, अगर ये मैनेजर काम नहीं करा तो एक अच्छे मैनेजर को ले आओ. बट दैट्स द थिंग. The owner is so exempt from any blame. That is the psychology of Chelsea fans. Because historically, first blame हमेशा manager पे गया है and then players पे गया है. But owner has always been absent from criticism. Because all fans want is transfer में good business and trophies, right? And if that model has worked for Chelsea, चाहे वो कितना भी unhealthy हो, Chelsea fans want that model repeated. And this is what I'm here to tell you. This is not sustainable. This is not normal. All the excitement, आप लोग डेडलाइन डे से 10 मिनट पहले एंजो की साइनिंग को आप कर सकते हो सपोर्ट. आप जाओ फिलिक्स की साइनिंग को कर सकते हो सपोर्ट. आप मुद्रिक की हाईजैक को सपोर्ट कर सकते हो. एंड यू कैन चीयर एंड यू कैन ट्वीट अबाउट येस वी आर रूइनिंग फुटबॉल अगेन एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. येस हम चीटिंग कर रहे हैं, क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे. दिस इज व्हाट इट इज. if you're taking the good of this ownership style, that is खुलेआम पैसे फेंको to whoever player you want, खुलेआम managers sack करो, and ये इसने आपको success दिया है, you also have to take the bads of it, that your owner might hire people that you don't really like. अगर आप उसको टॉड बोली को सपोर्ट करते हो in his buying of Enzo and his Mudrik and his Felix and his Maduekes and his Badiashils, कि भाई टॉड बोली हैज आवर बेस्ट इंटरेस्ट, अगर आप इन सब चीज़ों को चेयर करते हो, देन व्हाट इज द फ्रिक्शन इन चेयरिंग हिज अपॉइंटमेंट ऑफ ग्राहम पॉटर? क्या चेल्सी फैंस, आर यू फॉलोइंग फॉर द सेम बैड हैबिट्स दैट Abramovich got you used to? And this is why I feel that Chelsea fans have a Stockholm syndrome, because owners को blame बहुत रेयरली जाता है, बिकॉज सबसे पहला ब्लेम हमेशा मैनेजर को पहुंचता है. In the final part of the video, I'll try to explain to you why Potter should be sacked and why Potter should not be sacked. Let's get on with why Potter should be sacked. The first reason Potter should be sacked is there is no identity. What are you even supporting when you say, I support Potter? Is it just giving him time? Because that is a very weak argument to support Potter. What exactly are you supporting on the pitch? When we talk about Arteta's rebuild, yeah, Arteta ने क्लियर आइडेंटिटी करी थी, विच वॉज स्टार्टिंग में वी वर अ डीप सिटिंग काउंटर अटैकिंग टीम. टेन हाग की भी सिमिलर आइडेंटिटी है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द गेम के लिए वो हाई प्रेस करते हैं, उसके बाद वो प्रैग्मेटिक हो जाते हैं, जैसे आज हमने कार्लिंग कप फाइनल में भी देखा था. 60 मिनट्स के बाद से नो अटैक, सिर्फ डिफेंड करो, इन नंबर्स करो, एंड अगर काउंटर कट ऑप्शन मिले तो आप कर दो. आर्टेटा ने भी यही किया था. एंड देन धीरे धीरे जैसे आर्टेटा का प्रोजेक्ट आगे प्रोग्रेस किया, कंट्रोल बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड अब आप देख रहे हो उसकी लेटेस्ट इटरेशन विच इज कंट्रोलिंग स्पेसेस एज वेल.
So there was an identity from start to finish when Arteta came in. I think 2-3 हफ्ते में ही establish हो गया था, this is the way Arteta wants us to play. Potter ने अभी तक establish नहीं किया है. And I think it makes it very difficult to support Potter. When you say trust the process, what process are you exactly trusting, right? You can't see anything on the pitch. जब मैंने बाबा से भी पूछा था, what is Chelsea's play style? I don't think he could also give a coherent answer because किसी को नहीं पता कि Chelsea का coherent play style फील्ड पे क्या है. काउंटर अटैकिंग टीम है, पोजेशन बेस्ड टीम है, बर्नली की तरह लॉन्ग बॉल टीम है, सेट पीस स्पेशलिस्ट है. Nobody really knows. The second reason you have to sack Potter is no matter what you call it, unlucky or whatever, you cannot underperform your XG by this much. आपको साउथहैम्पटन के अगेंस्ट एक गोल तो मारना ही था. आपके पास इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, आपने इतने पैसे खर्चे हैं. You have to score a goal at least. But Chelsea just can't seem to do it. आप साउथहैम्पटन के अगेंस्ट गोल नहीं मार पा रहे हो. It shows that there is something in the management which is lacking. आप एक टीम जिसने 20 गेम में क्लीन शीट नहीं रखी हुई, यस आप बहुत क्लोज आए, बट उसका फायदा क्या हुआ? These players, from your Maduekes to your Sterlings to your Felix, these guys have proven goal scoring records. Felix at least एक अल्ट्रा डिफेंसिव एटलेटिको मैड्रिड में भी गोल मारने की क्षमता रखता है. Raheem Sterling was one of the best goal scorers at Man City, and Madueke भी PSV में he was having an amazing season. तो अब suddenly क्या हो गया that these guys forgot how to put the ball in the net? ये amateurs तो नहीं है. These are proven goal scorers. What is happening? So at some level, it is Potter's fault and his जो पूरे करियर में उसके साथ रहा है where he has struggled to actually demonstrate goals on the pitch and XG high चलता रहता है. That's not going to work at an elite club like Chelsea. The final thing, well, not the final thing, one more thing that really works against Potters is जो बाबा ने एक अच्छी तरह से मेरे को हाईलाइट किया था स्ट्रीम पे, चेल्सी के पॉइंट्स कहाँ से आ रहे हैं. इस प्ले स्टाइल से तो मुझे नहीं लगता चेल्सी के कहीं से पॉइंट्स आ रहे हैं. जैसे मैंने कहा, इफ यू स्ट्रगल टू बीट द बॉटम प्लेस टीम एंड यू स्ट्रगल टू स्कोर अ गोल अगेंस्ट देम, then it's a problem. Chelsea still have to play Arsenal, United, City, Liverpool, Newcastle. These are the other fives of the big six. अभी Spurs से हारी है, तो they've lost to another big team, but they still have to play these guys, and some of these games are away from home. इनके बाद आप जोड़ दो the bogey teams, your Brightons, your Brentfords, your Fulhams, कभी कभी विला, लेस्टर. 10 गेम्स तो यहीं हो गई. ये सारी टीम्स बहुत अच्छी हैं, टॉप हाफ ऑफ द टेबल टाइप टीम्स हैं ये, एंड ऑन देयर डे दे कैन बीट एनीबॉडी. चेल्सी के पास 13 या 14 गेम्स ही बची हुई हैं. Can Chelsea just only afford to get 9 points? Because is play style से, if you struggle against Southampton, I can promise you Leicester might punish you, Brentford will punish you, Brighton might punish you, Villa might punish you, and ये जो other top teams हैं, Arsenal, United, Liverpool, चलो लिवरपूल का फॉर्म अभी थोड़ा लड़खड़ा रहा है, Newcastle, they will punish you really badly. So it'll just get worse and worse for Chelsea if they only secure 9 points or 12 points from now till the end of the season. इनफैक्ट बाबा वाज इवन मोर पेसिमिस्टिक. बाबा को तो 6 पॉइंट ही दिख रहे हैं आते हुए. सो यू कांट कंटिन्यू विद दिस. हर एक ओनरशिप का एक ब्रेक पॉइंट होना चाहिए. एंड व्हाई आई से दैट, सब आर्सेनल एंड आर्टेटा की बात करते रहते हैं, बट आर्सेनल हैज एक्चुअली हैड 2 रीबिल्ड्स पोस्ट वेंगर. वन वाज एमरी, सेकंड वन वाज आर्टेटा. एमरी वाज द रिस्पांसिबल फॉर द फर्स्ट रीबिल्ड, बट एटलीस्ट बोर्ड के पास इतना सेंस था टू सी कि हमने गलती कर दी एमरी को अपॉइंट करते हुए, एंड दे प्रॉम्प्टली सैक्ड हिम. There is no way to tell whether Potter is an Emery or an Arteta. Potter keeps making these references to Arteta himself. But what if he's just an Emery? I think board को अपना ego side पे रख के admit करना पड़ेगा we got it wrong and they have to replace him. They have to sack him because Chelsea जितना जैसे season progress करता रहेगा, the gap between them and the top teams will keep on increasing. And as much as I think रेलीगेशन की बात है, एग्जैजरेटेड है, फॉर्म तो बिल्कुल रेलीगेशन वाला है यार. आई थिंक 2 विक्ट्रीज इन 16 या 17 गेम्स, दैट्स हॉरिबल मैन. दे हैव टू सैक पॉटर फॉर दीस रीजंस.
why Chelsea should not sack Potter. Um, I think there are some reasons for that as well. The number one reason is I don't think it's financially viable or smart for Chelsea to sack him. Chelsea have spent £500 million this year. They have also spent additional money on Potter's release clause from Brighton, giving him a new contract, his staff, new scouting department, all of those things. उसमें बहुत पैसे खर्च हुए. So close to 560 or 660 billion in this year. Now let's say अगर Potter के पास exit clause भी है, क्या करोगे आप उस exit clause का? Let's say you don't have to pay him anything when you fire him, but you have to get a new manager for sure, right? No manager will work for free. Let's say you get somebody who's okay for a 3-year contract at 12 million, Potter की same wage पे. So you're spending at least 36 million there. Then आप अगर उनको 3 साल भी रखोगे, they would want their players, right? उसमें आपको फिर से 100 मिलियन 200 मिलियन खर्चने पड़ेंगे बिकॉज अब मार्केट आप लोगों ने इतना इन्फ्लेट कर दिया है that no winger will come for less than 100 million. And if you get a manager with a very unique play style, he wants tall defenders, not fast defenders. He wants a tall central defensive midfielder, not a technically gifted central midfielder. He wants technically gifted and not pacey wingers. आप समझ रहे हो? They will want their own personal, which is going to cost so much more money. एंड अगर उसके साथ भी काम नहीं चला, यू हैव टू गेट, निधि भाई ने भी बोला था स्ट्रीम पे, यू हैव टू गेट दिस अपॉइंटमेंट 1000% राइट, बिकॉज इफ दैट डजंट हैपन यू विल स्टार्ट रिपीटिंग द प्रोसेस अगेन. एंड ट्रस्ट मी, बोली एंड जो क्लियर लेक उनका ग्रुप है, दे विल नॉट फॉरगिव दिस डेट, एंड इन फैक्ट दे विल नॉट इवन इंकर इतना ज्यादा डेट if they are smart financially, which I think they are. The next thing is, who is really going to come, who is going to fit this mold of Chelsea manager? Now, some people will say, Mourinho को वापस लाओ. I don't care. Mourinho knows about the club. Mourinho is a Chelsea manager. उसने पहले भी Chelsea को बचाया हुआ है, अभी भी बचा लेगा. But I think that's sort of a misplaced romanticism with Jose Mourinho. I think people are forgetting how bad it got under Jose Mourinho. And this is like saying, nahi yaar, I tried dating a new person, this person has hurt me, I'm just going to go back to my toxic ex because at least I know what kind of toxicity I'm getting. And I think it's a little misplaced. The final part, I think it doesn't make sense to sack Potter. Who will come? Which elite manager is really out of a job? Sab kahenge Zidane. Fair enough. Apart from Zidane, if you say, let's say you can't convince Zidane, who will you get? No manager who is working right now will leave his job at the business end of the season. And if you want to tempt them to leave their jobs, you will have to offer them Potter level salary again. And फिर आप फिर से सेम सिचुएशन में आ जाओगे जहां पे आपने 5 years 60 million का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एक और मैनेजर को, एंड मिडवे अगर आपने ये भी साइनिंग आपने मैसअप कर दी, यू आर स्टक इन दिस पोजीशन अगेन वेयर यू आर स्क्वांडरिंग अनदर 60 million. तो यार, I think it all comes down to the fact that the finances don't make sense. There is no good manager available. And if there is no guarantee that they will come. It is the business end of the season. And I think for these reasons, Potter might not be sacked. It's just the process. But this was my opinion on why Potter deserves to be sacked or not. I think it's a video on giving you context about what's really happened at Chelsea and how Chelsea fans think and what are some of the reasons to keep Potter and maybe some of the reasons not to keep Potter. This was my attempt at it. I hope you like it. Sorry for the wrong video. If you've made it this far, first of all, I love you for making it this far and watching the entire thing. And second of all, if you haven't subscribed, please subscribe to my channel. And if you haven't liked the video, please like. It really helps me a lot. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed it. And as always, come on, you guys.